Good evening, everyone. Let's start with our Ragnan class. Today, we will discuss Aphorism 62 onwards. To the last class, we finished Aphorism 61. I'm sure 61 is very much completed. Some internet issue, so I believe it should not be sounding incomplete. But for last couple of classes, we are discussing about the antipathic mode of therapeutics. And in the last class, in Aphorism 61, Helmin discussed about the situation that he imagined it should be like this, it should have been like this, it should have been like this, but reality is altogether different because of the ignorance. There were 3 points of the ignorance, and on that basis, the old school physicians never understood that this kind of mode of treatment, antipathy, is in any way not a curative way of treatment, rather harmful killing. They never understood from the death succouring, harm succouring with the antipathic mode of treatment. And they never understood that as such no cure took place, and they never look into the nature that only similar cure the similar, as given in Aphorism 46. Today, let us start with the Aphorism 62. Reading Aphorism 62. But on what this pernicious result of the palliative antipathic treatment and the efficacy of the reverse. Now he says that at the face of it, antipathic mode of treatment, which Hahnemann just now explained in the previous aphorisms, he is giving a contrast now. That in this face of very harmful palliative mode of treatment, antipathic mode of treatment, what is the efficacy of the reverse? And in the 2 brackets, he's telling what is the meaning of reverse. Means the homeopathic treatment. Depend is explained by the following facts, deduced from manifold observations. He says in Aphorism 62 that in the coming aphorisms after 62, after many experiments and observations, Hahnemann found out the facts regarding the homeopathic treatment, and what Hahnemann has found out, the homeopathic way of treatment, the efficacy of the homeopathic way of treatment. Why such efficacy of the homeopathic treatment is only and only very thoroughly observed by Hahnemann only. Though there are many physicians, those who really felt and wrote in their literature about the glimpses of law of similia, homeopathic way of treatment. But Hahnemann observed many facts
and he is able to give us that very clear cut explanations about the homeopathic way of treatment, which is altogether rapidly curing. Cure is permanent, means it is not again and again showing any aggravation. So, like this, Hahnemann is trying to make us understand one point, that whatever I am able to tell you, the homeopathic way of treatment, though it is there since the time immemorial, since the beginning, because it is the law from the nature, but it was very scarcely observed, practiced, and no one established. No one could know this fact so clearly that he should be convinced and established this law of similia. Only Hahnemann says, no one before me perceived, though they are so very palpable and so very evident. No one before me perceived, though it was quite palpable and evident. When you say palpable means noticeable, it was quite noticeable and are of such infinite importance to the healing art. It has got such an importance which you really can't count them. Infinite, infinite importance to the healing art. And those who have been practicing for many, many years, and those who have already practiced and left this world, but left their experiences recorded in their books, they have done such wonderful cases with the homeopathy that this word infinite get explained. You never know what kind of pathologies are improved, which you can't really imagine. What kind of cases got cured. Even they should be put in the category of medical miracles. So just read this aphorism again, try to understand, then we will go further. But on what this pernicious result of palliative antipathic treatment and the efficacy of the reverse, the homeopathic treatment, depend is explained by the following facts, deduced from manifold observations which no one before me perceived, though they are so very palpable and so very evident and are of such infinite importance to the healing art. The most important thing, what he really wants to say regarding the homeopathic way of treatment, that he's trying to explain why homeopathy is so useful, so important. He is trying to explain in the coming aphorisms. इस aphorism को अगर हम 62 को देखें तो यहाँ पर हैनमैन एक कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कंपैरिजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंटीपैथी एंड होम्योपैथी की. इसमें वो ये कह रहे हैं कि एंटीपैथी तो एक परनिशियस ट्रीटमेंट है. परनिशियस से मतलब बिल्कुल ऐसा जो सिर्फ नुकसान करता है, ऐसा ट्रीटमेंट है. उसके फेस पे होम्योपैथी जो फायदा करता है, आखिर ये फायदा करता क्यों है, इस क्यों को यानी कि साइंस ऑफ द लॉ ऑफ सिमिलिया उन्होंने अब एक्सप्लेन करनी है अफोरिज्म 62 के बाद. और वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो साइंस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया के पीछे क्या ऐसा है कि ये फिनोमिना ऐसे काम करता है, जो वो एक्सप्लेन करने वाले हैं 63, 64 के अंदर, ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद में निकाला गया है और सारा कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, कोई इमेजिनेशन नहीं है इसके अंदर. और हैनमैन ये भी कहना चाहते हैं कि ये सारी बातें जो कि
बड़ी खुल के सामने दिखती थी सबको, सबको समझ में आती थी, बड़ी खुल के समझ में आती थी सबको। लेकिन ऐसा न जाने क्या हुआ कि किसी को भी गिरता हुआ एप्पल नजर ही नहीं आया, किसी को भी लॉ ऑफ सिमिलिया इस तरह से नजर नहीं आया कि उसको हेनमिन के जैसे एक स्टैब्लिश कर दे आर्ट ऑफ हीलिंग में, जहां पर कि इस लॉ का जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट था। ऐसी इंपॉर्टेंस है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अपने बहुत सारे केसेस में, जितने भी स्टॉलवर्ड्स के केसेस हुए, इस पूरी दुनिया के जो होम्योपैथी के स्टॉलवर्ड हुए, इंडिया के जो हुए, जिस तरह के केसेस उन्होंने किए, अब इस समय के प्रेजेंट टाइम के जो स्टॉलवर्ड्स एंड लेजेंड्स, जिनके केसेस ऐसे ऐसे होते हैं कि आदमी उनको सिर्फ मेडिकल मिरेकल की कैटेगरी में ही रख सकता है। तो इस तरह के बातों को अगर हम ध्यान दें तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से ये इनफाइनाइट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये है क्या आगे का एक्सप्लेनेशन? ये आगे का एक्सप्लेनेशन जो है वो वही है जो कि हम तब पढ़ते आ रहे थे, प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन। एंड सेकेंडरी एक्शन दो तरह का होता है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन एंड सेकेंडरी curative action. So let us go further into the aphorism 63 and try to understand about this primary action and secondary action. So I just make you explain very simply, then we will go into the aphorism. Henneman wants to say that whenever a medicinal agent, whenever a substance which is of medicinal value, means which is in itself having a power to harm, which is a poison, such substance, how does it work? Henman says that it starts working along with the vitality, means the vital force. So medicine immediately works on the vital force. If you try to make this understand with the modern pharmacology, what really they say, how do they know that this is a medicine and what is all happening inside? They have their explanations, but then both the explanations are nearby. In the modern pharmacology, they explain that all these medicinal substances, they go and act on the organism through these specific receptors. Now you imagine, if you read the exact pathophysiology occurring at the receptor site, how medicine is able to act, we will be getting a complete scientific explanation, and that explanation is very simply explained by Hahnemann as the medicine act on the vital force. Those days are gone when we used to say that it is affecting the blood and affecting this and that. It's not that simple. If you go the modern pharmacology now, you will come to know that there are specific receptors, and through that it is working. And how the receptors are activating with the medicinal substance, with specific medicinal substances, specific receptors are getting activated. So, if you go into those details, the explanation will be very simple, as Hahnemann told here, that the medicine act on the vital force. Here, the vitality and the power of the medicine. Power of the medicine means what it can alter. These are the two things which work together. But in these two, the vitality, the vital force is passively acting, means it is allowing the medicinal substance to do
the changes. So vital force plays a passive role, and the medicinal substance plays the active role. Hence, Hanuman says in this Aphorism 63 that it is a conjoint action. When you say conjoint action, means it is the action of the uh, more than one forces. Here, two forces. Hence, conjoint action. It is not a single action. Conjoined means who who all are co-joining. One, the medicinal power which you are testing. The other, on which it is going to act, the vitality, the vital force. Vital force remains passive, and the medicinal power remain active. This is primary action, conjoint action. But after the power of the medicine is exhausted, now a single action of the vital force only starts, which is always the opposite of what is being experienced by the vitality. This is a secondary counteraction. So let us just read this Aphorism 63, what it says. Every agent that acts upon the vitality, and now he is giving in two brackets what does this agent means. Every medicine. So you can read it like this: every medicine deranges more or less the vital force and causes a certain alteration in the health of the individual for a longer or a shorter period. If you see Mathematica Pura, most of the symptom Hahnemann is telling that this symptom developed after this many hours. You can make out for how many hours symptom continue to come. So either it is for a longer duration or for a shorter duration. This is termed primary action. In italics, he says. Although a product of the medicinal and vital powers conjointly, it is principally due to the former power. Although a product of medicinal and vital powers conjointly, but principally due to the former means the medicinal power. As I told you, the conjoint action. And when you say conjoint action, vital force is playing as passive, and the medicinal power is playing as principal or active role. Here he explained the primary action. What is the definition of primary action? It is a conjoint action of the medicine and the vital force. Medicine is actively playing and vital force is passively playing. Now, second sentence of the Aphorism 63. To its action, our vital force endeavors to oppose its own energy. To its action, our vital force endeavors to oppose its own energy. This resistant action is a property, is indeed an automatic action of our life preserving power, which goes by the name of secondary action or counteraction. So, when it is like a spring, if you just press the spring down, and when you remove the power of your hand, it just rebound back. It is the automatic action of the vital force that when it goes under the pressure, it goes down under the pressure of any medicinal power. Once that power of the medicine exhausted, it rebounds back. This rebounds back is always opposite in nature, whatever is being experienced by the vitality. So this is what is the definition of primary and
सेकेंडरी एक्शन। अगर आप देखें तो जब हैनमन 62 की बात कर रहे हैं, अफोरिज्म 62 में जब वो ये बता रहे हैं कि होम्योपैथी के बारे में कि इस तरह के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, लॉ ऑफ सिमिलिया से जिस तरह के फायदे होते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की साइंस एक्सप्लेन करते हुए हैनमन हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन के बारे में बताते हैं। प्राइमरी एक्शन क्या होता है और सेकेंडरी एक्शन क्या होता है? प्राइमरी एक्शन का मतलब है एक ऐसा सम्मिलित प्रयास है, एक कंजॉइंट एक्शन है। कौन सम्मिलित है इसके अंदर, कौन जुड़े हुए हैं इसके अंदर? दो जने जुड़े हुए हैं। एक मेडिसिनल पावर जो कि आप टेस्ट कर रहे हैं, और किस पे कर रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म पे कर रहे हैं। उस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हर चीज एक्सपीरियंस कौन करता है? सबसे पहले एक्सपीरियंस उसको वाइटल फोर्स करता है। अगर आप इसको मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जाएंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि स्पेसिफिक मेडिसिन स्पेसिफिक रिसेप्टर पे किसी बड़े ही फाइनर मैकेनिज्म से जाकर के हमारे बॉडी पे एक्ट करती है। यही बात को हेनमिन और ज़्यादा सिंपल तरीके से कह रहे हैं। अपने टाइम के मुताबिक तब तक इतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा कि वाइटैलिटी अफेक्ट होती है, वाइटल फोर्स अफेक्ट होती है। और वाइटल फोर्स यहाँ पर एक पैसिव की तरह से, एक कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, जो मेरे साथ करना है करो। मेडिसिन की पावर वाइटल फोर्स के साथ जो चाहती है वो करती है, और वाइटल फोर्स जब हो रहा है उसके साथ उसको होने देती है, जैसे कि एक स्प्रिंग को दबाया जा रहा है। और फिर जब मेडिसिन की पावर खत्म हो जाती है तो एक रिबाउंड इफेक्ट होता है, एक अपोजिट इफेक्ट होता है, दैट इज ए सेकेंडरी एक्शन और ए काउंटर एक्शन। तो प्राइमरी एक्शन कैसा एक्शन है? कंजॉइंट एक्शन है, जिसमें दो पावर मिल के काम कर रही है। एक पैसिव है, एक एक्टिव है। कौन एक्टिव है? मेडिसिनल पावर एक्टिव है। कौन पैसिव है? वाइटल फोर्स पैसिव है। लेकिन सेकेंडरी एक्शन या काउंटर एक्शन सिंगल एक्शन है। किसका है? वाइटल फोर्स का है। किसके अगेंस्ट है? जिस तरह से भी वो उस दवा से इंप्रेस हुआ था उसके अगेंस्ट एक रिबाउंड इफेक्ट है, एक ऑटोमेटिक एक एक्शन है, जो कि आप उसे एक रिएक्शन भी कह सकते हो। इस तरह की बात होती है। सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी एक्शन एंड द सेकेंडरी एक्शन। गोइंग फर्दर टू अफोरिज्म 64, what does it say? During the primary action of the artificial morbific agents, you understand, this is medicines, on our healthy body, as seen in the following example, our vital force seems to conduct itself merely in a passive manner, receptive manner, as I told you, and appears, so to say, compelled to permit the impression of the artificial power acting from without to take place in it and thereby alter its state of health. So, in this aphorism 64, Henneman is trying to explain that from 65 onward, from 65 aphorism onwards, I will give you the example. But what exactly happens in the primary action? In the primary action, this medicinal power, it is working on the healthy body, which you will understand in the examples given in aphorism 64. Here, the vitality, the vital force, plays like a receptive manner, and the power of the medicine is now showing its power on the another power, that is vital force, which is at the receiving end, and the medicinal power is at the giving end. And then what happens? Alteration in the health takes place. This is the primary action. Keep in mind, Rakruvi. Keep in mind when you prescribe a medicine to a sick human being. It then, however, appears to rouse itself again. See, the medicinal power is going to be exhausted. The receiving end vital force, the receptive vital force, revives, reawakens, and rouse itself again
as it were, and to develop what? Two kind of condition, A and B. What is that A condition? The exact opposite condition of the health, in bracket, counteraction, secondary action, to this effect, that is primary action, produced upon it. Means a medicine which is producing in its primary action constipation. So in the rebound effect, it is going to produce diarrhea. Or you can say a medicine which has got a power to produce diarrhea, it is going to produce in the secondary action constipation. If there to be such an opposite, and that is as great a degree as what the effect, primary action of the artificial morbific or medicinal agent on it, and proportionate to its own energy. So here two important things: the secondary action, the counter action, it will be opposite, and the intensity of that opposite reaction will depend on two things. One, the dose given of the medicinal power, dose given of the medicine. And the second is that what is the power of this vital force. For example, somebody whose vital force is very healthy, very vibrant, it will have a very powerful rebound effect. But somebody's vital force is weak. In that weak condition, it will not be having that powerful rebound effect. So this is what the most important thing to understand, that the kind of primary action in the rebound effect, the opposite of it will take place. But the intensity of the opposite will be depending on the dose given of the medicine and the rebounding power of the vital force. What kind of vital force the power of the vital force is, it depends on that. So this is like this. Or what else? What can be the other condition? That is B. If there be not in nature a state exactly the opposite of the primary action, it appears to endeavor to indifferentiate itself. That is, to make its superior power available in the extinction of the change done. Wrought means done in it from without by the medicine, in place of which it substitutes its normal state. Secondary action, that is also called curative action. So now imagine, for example, in a sick condition, a medicine is given which is of similar in nature, and it is going to produce a primary action. In that primary action, what is going to happen? It is going to replace that diseased condition, because medicinal power is always unconditional and always more powerful than the disease itself. So in place of the diseased condition on the vital force, the medicinal power will be sitting, will take over. Now, because it is the similar, and vital force is unable to differentiate, because nothing opposite took place here. Like somebody suffering with vomiting, somebody suffering with nausea, and you're giving EPCAC, which has got a power to produce nausea. In that condition, how vital force is going to differentiate between the diseased condition, because of which nausea was there, or because of the medicine which is producing nausea? Because here the stronger one will remove the weaker one, medicinal disease will remain. And because the very small dose of the medicinal disease
it will be replacing it, it just going to secondary action, it is just going to put that aside, hence the cure takes place. Think over, you will be able to understand. अगर हम अफोरिज्म 64 को एक बारी दोबारा से समझने की कोशिश करें तो वो क्या बता रहे हैं हमको, थोड़ा प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन को एलॉबरेट करके बताने की कोशिश करें। क्या प्राइमरी एक्शन में वो कह रहे हैं कि जो भी आपने मेडिसिनल सब्सटेंस दिया, ये मेडिसिनल सब्सटेंस देने के बाद में एक हेल्दी पर्सन सिक हो जाता। कैसे सिक हो जाता? कि मेडिसिन की जो पावर है उसको वाइटल फोर्स बड़ा रिसेप्टिव बन के बड़ा शांति से उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जो कर रहे हो मेरे साथ करो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक ऑल्टरेशन ऑफ द हेल्थ डेवलप होता है, एक सिकनेस डेवलप होती है उस मेडिसिन से। अब यहां के बाद अगर ये मेडिसिन जिसको भी दी गई, हेल्दी को दी गई, हमें सिकनेस सामने आ गई। अब हम मान लीजिए कि किसी को दवा देते हैं, किसी सिक पर्सन को दवा देते हैं, और उस सिक पर्सन को आपने अगर एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया तो क्या होगा, कंडीशन ए होगी। क्या होगा उसके अंदर कि आपने किसी को डायरिया है और आपने क्या किया, उसको एक ऐसी दवा दी जिससे कि उसको कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस हो। ऐसा देने के बाद में उसे कुछ देर के लिए तो डायरिया रुक गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ, बट उसके बाद उसका डायरिया और सीवियर हो गया और सीवियर हो गया। दिस इज ए काइंड ऑफ काउंटर एक्शन। क्यों? क्योंकि एक रिबाउंड इफेक्ट होता है, जैसे कि हमने अफोरिज्म 63 में पढ़ा। लेकिन ये रिबाउंड इफेक्ट कितना सीवियर होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? दो बातों पे डिपेंड करता है। एक बात कि आपने कितनी डोज में एंटीपैथिक मेडिसिन दिया था, उस डोज के मुताबिक जितना जोर से दबाया गया लगभग उतने ही जोर से रिबाउंड इफेक्ट आएगा, बट वो और भी कितना सीवियर आएगा रिबाउंड इफेक्ट, ये आपकी डोज और वाइटल फोर्स की वाइटैलिटी, इन दो बातों पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये होगा जब एंटीपैथिक मोड में अगर आप देंगे। एक और भी कंडीशन सकती है, उसको बी कंडीशन कहा गया। वहां पर क्या हो रहा है कि आपने एक पर्सन को बहुत नौसिया हो रहा है और आपने उसको एक दवा दी जो नौसिया ही प्रोड्यूस करता है, आपने ईपिक एक्ट दिया। तो क्या होगा, यहां पर वाइटल फोर्स को कुछ भी समझ में नहीं आया, इनडिफरेंशिएट कंडीशन है, डिफरेंशिएट करने जैसा कुछ है ही नहीं। वाइटल फोर्स को नौसिया पता है, नौसिया किससे हो रहा है इसके बारे में नहीं मालूम होता है। तो नौसिया डिजीज से हो रहा है या नौसिया इपिकैक से हो रहा है। तो जब किसी इपिकैक एक पेशेंट को दिया जाता है जिसको इतना सीवियर नौसिया है, उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि मेडिसिनल पावर ज्यादा है डिजीज पावर से, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी एक्शन में जो डिजीज नौसिया है, नौसिया जो डिजीज के कारण है, वो वहां से एक्सटिंग्विश हो जाता है और उसकी जगह पे वहां पर मेडिसिन से, इपिकैक से प्रोड्यूस होने वाला जो नौसिया है वो वहां पर रह जाता है। अब यहाँ तो किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएट करने वाला रहा नहीं जिससे कि कोई रिबाउंड इफेक्ट डेवलप होगा। और जो भी आपने इपिकैक जिस भी तरह के डोज में दिया था वो वाइटल फोर्स के लिए बहुत हल्का है। और दूसरी बात कि हर मेडिसिन की अपनी एक पावर एग्जर्ट करने की ड्यूरेशन है, तो वो ड्यूरेशन एग्जॉस्ट हो जाती है उस इपिकैक को जो आपने दिया था वहां पर, वो ड्यूरेशन एग्जॉस्ट हुई। और वो ड्यूरेशन एग्जॉस्ट हुई वहां पे, और वाइटल फोर्स ने अपना जब रिबाउंड इफेक्ट दिखाया तो वो इतना हल्का इफेक्ट था उस मेडिसिनल इफेक्ट का जो नौसिया था, कि उस सेकेंडरी एक्शन में एक बहुत अच्छी बात होती है कि किसी तरह का सीवियर रिबाउंड इफेक्ट नहीं होता, रादर वो जो हल्का फुल्का इफेक्ट इपिकैक का रह गया था वो चला जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। दैट इज ए सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। आप इसको बहुत आराम से, बहुत
तसल्ली से धीरे धीरे करके पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। ये वाली बात बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन की बात क्या हो रही है। इसके बाद में इसको हम फर्दर फिर दोबारा से पढ़ते जाएंगे। हैंडमैन ने यहाँ पर ही नहीं बात को छोड़ा, उन्होंने जब इस बात को वो आगे लेके चले तो 65 अफोरिज्म में उन्होंने इसके बहुत से एग्जाम्पल्स दिए। जब इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो हम फिर दोबारा से अफोरिज्म 63 एंड 64 को रीलर्न कर लेंगे, दोबारा से एग्जाम्पल्स के साथ फिर डिस्कस कर लेंगे। जब हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे तो हमें बात और आसानी से और अच्छे ढंग से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये, और वैसे भी हमने सभी ने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन एंड सेकेंडरी काउंटर एक्शन को अपने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा ही है। तो इसको लेकर के बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन बोलने का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन इसको किन बातों में ध्यान रखना जरूरी है, इसको भी पेशेंट को जब आपने डोज डिसाइड करनी है, पेशेंट की पोटेंसी डिसाइड करनी है, उसमें इस प्राइमरी और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन का थॉट दिमाग में रखना चाहिए। ये भी हमें डोज सीखने में, पोटेंसी के सिलेक्शन को सीखने में, एक बार में कितनी दवा देनी है, हम ड्रॉप डोजेस दें कि नहीं, हम गोली में ही दें, हम पेशेंट को कैसा रिपीटिशन की बात करें, ये सारी की सारी बातें इस सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन और प्राइमरी एक्शन, इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन अभी हमने की है, इसमें हम थोड़ा क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग देने में हमको ये मदद करेगा। अगर हमें ये मन में नहीं रहेंगी ये बातें, ये वाले डॉक्ट्राइन अगर हमारे दिमाग में नहीं है, अगर ये वाले प्रिंसिपल्स हमारे दिमाग में नहीं है, तो हम पूरी तरह से डोज को, यानी कि पोटेंसी और रिपीटिशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखा जाए, अंडरस्टैंड करने के लिए ध्यान दे के रखा जाए। अभी तक जो भी हमने अफोरिज्म डिस्कस किए, इनको अगर हम एक बारी टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखें, हमने डिस्कस किया 62, 63, 64, 65, 64 अप टू 64, 62 से 64। तो 62 में क्या करें, द रीजन ऑफ द इंजूरियस नेचर ऑफ द पैलिएटिव and of the sole efficacy of the homeopathic employment of the medicines. Okay, understood. And 63 में क्या कहते हैं, depends upon the difference between the primary action that take place under the influence of every medicine and the reaction or secondary action subsequently affected by the living organism, that is vital force, that we learnt. And in 64 he explains explanation of the primary and secondary actions. And in the next class we will discuss aphorism 65, that is examples of both primary and secondary action. In that, when we are discussing the examples, we will be really trying to re-understand, relearn the concept of primary and secondary action, right? So I believe things are really clear to everyone, and I'm not really finding anything in these aphorisms regarding the appendix. So there is no point going into the appendix with this aphorisms we have discussed. What we can see is we can see the comments if we have any. Then sunshine, sir. Rebounding effect of vital force can be weak or strong. On what factors it depends. It means why someone's vital force rebounding effect is stronger and someone's weaker. Depends on the dose given which has exerted the primary action. And one is the dose, and the second, that how much powerfully vital force will react back. You can understand there are springs very strong. If you put something here, the things may go up to the roof. But suppose if that spring is not that very sharp and hard, things may go up to some few feet and fall back. So it is the vitality of the organism which is responsible, and the medicine, the dose of the medicine given and exerted the primary action. It depends on these two things. I hope it is clear to you. Sunshine. Sunshine is the name. I don't know. So
Yeah, good, very nice. So thank you very much for today. In the next class, we will again relearn both the things, and we will discuss many other examples. Another comment: suppression of the foot sweat remain or change into another disease. It's a good thing you are telling, Umesh. Like this, these principles, these doctrines are going to make us explain all these kind of points as Umesh has told, and many more. And I think you will be coming up with lot many suggestions on that. And sir, one thing, one doubt more. So write me, what is that doubt? Please explain proximate cause. I will come to that point, right? I will discuss this proximate cause. Let me just work on it. I am working on it. I'll just get back to you in a some time. So Umesh, what are you saying? Due to network problem, what do you mean? You want to say something? Can you hear me, all of you? Any network problem you're facing from my side? So, Umesh, never mind. In the next class, when we are going to discuss the examples, we will take up your point also. You can just tell me, right? Okay. Bye bye, everyone. Thank you.